Hello, my dear friends. As I promised to all of you that I'll be back with the entire form filling procedure, registration process for IIM Indore's IPMAT program. So here we are, the 5-year integrated program in management. इसके forms out हो चुके हैं, as you already know, and registration process start हो चुका है. And before we fill in this application form, we must watch this entire video. क्यों देखनी चाहिए? बिकॉज आप लोगों के लिए पहली बार है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिकॉज ऑफ विच आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो. सो बेटर है ना, डिस्क्वालीफाई होने से अच्छा ये वाला वीडियो देख ले, एक एक पॉइंटर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको समझ लें, एंड देन वी कैन स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म. सो 10-15 मिनट्स लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे. सो सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल सर्च में IIM इंदौर IPM टाइप करो. 5-year integrated program in management, इसका लिंक आएगा, and we'll click on this link and it will take us to this page. Okay, now you have 5-year integrated program in management, and if I'll scroll down you will find a lot of information about this program, right? So यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा admissions. So admissions पे क्लिक किया and again scroll down करेंगे. So you will see that for domestic applicants, application procedure complete. For domestic applicants, online registration to get user ID and password for new applicants. So as we are new applicants, हमने अभी तक process start नहीं किया है, so we'll be clicking this particular link. Okay, now as soon as I'll click it, it will redirect me to another page. Let it open. So recommended browser, कुछ instructions दी हुई हैं form filling के लिए. So I would recommend everyone to read these very tiny instructions. Asterisk mark है तो these fields are mandatory. Candidates has to fill in below mentioned details to receive the user ID password, right? तो ये सारी की सारी चीजें fill करनी है आपको, instructions read करनी है, close कर देते हैं, and then we respect your privacy and shall only collect and use as much personal information from you as required to the administrate your account. तो प्राइवेसी नोटिस है, राइट? इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यहां से आई अग्री, एंड नाउ आवर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिंस. ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको क्या करना है? you'll have to fill in your complete name as given in your 10th मार्क्स सर्टिफिकेट. 10th की जो मार्कशीट है ना, उसका जो सर्टिफिकेट है, जो वहां पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही नेम लिखना है. फिल इन योर जेंडर, कैटेगरी. सो लेट मी राइट एनी रैंडम नेम्स. ओके, सो ये मैं प्रोसेस कर चुका हूं. सो ABC, जेंडर आई सेलेक्ट एज मेल, कैटेगरी जनरल. ओके, now candidates applying under general NC OBC EWS category should be born on or after 1st of August 2006. Close. Okay, person with disability, I'll fill in no. Date of birth, so 2006 1st of August के बाद होनी चाहिए. So I'll again select a random date of birth. So let's say 2014 1st of January. Okay, again random date of birth. I'll select an email address. So now ये सारी चीजें मैं रैंडमली फिल कर रहा हूं, आपको एक्चुअल जो भी है आपकी वो फिल करनी है. ठीक है? ओके, ना ईमेल एड्रेस, जो भी आप ईमेल एड्रेस यूज करना चाहते हो फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन, यू विल हैव टू फिल इन दैट ईमेल एड्रेस. सो आई एम फिलिंग इट रैंडमली, abc@gmail.com. all right. okay, this is again a random email ID because ये प्रोसेस मैं कर चुका हूं. I'll show you the entire login process. I'll have to confirm the email ID. So again abc@gmail.com. okay, so I've confirmed the email ID. Now here I'll have to fill in the nationality. मैं इसका थोड़ा सा size increase कर लेता हूं so that it will be clearly visible to all of you. okay, so now nationality, I'll select Indian. The next is country of residence. I'll select India. Okay, now you'll have to fill in your email ID. So your phone number. So आपने जो email ID fill किया है, जो phone number fill करने वाले हैं, इसी पे ही आपके user ID and password deliver होंगे. Okay, so please fill in these two details. These are very important details. Please fill in these details very carefully. Okay, so again I'll select a random number.
confirm phone number. All right, I've done that. Okay, now after that, okay, these things are filled in. Okay, okay, and you will have to write in this image 9483. So ये अलग अलग हो सकती है सबके लिए 49. okay, then a declaration, इस पे अग्री पे क्लिक कीजिए एंड जैसे ही आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो भी आपने डिटेल्स फिल इन की हैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई आ जाएंगी एंड यू विल हैव टू वेरीफाई ऑल दीज डिटेल्स वंस अगेन. ओके, सो अगेन मैं इसका थोड़ा सा और साइज इंक्रीज कर देता हूं so everything is visible properly. Okay, so these are the details. So your name, your gender, your category, your contact number, your date of birth, everything is mentioned here and you just have to select the checkbox if the entered value displayed is correct. So I'll select all of them if all of them are correct. अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको चेंज कर लो. Okay, I've selected all of them and I'll click submit button. Now, as soon as you will submit this form, okay, so आपका registration process complete हो गया है. अब आपको क्या करना होगा, इसको सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी एंड आपके फोन नंबर पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा एंड उन दोनों चीजों को यूज करके हमें लॉग इन करना होगा. ऑलराइट, so I'm not submitting this form. You can click on submit if all the details are correct and then we'll move on to the login process. Okay, लॉगिन के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन प्रोसेस पे. अदरवाइज आई क्लिक दिस लॉगिन बटन एंड यहां पे आपको अपना यूजर आईडी जो आपको फोन नंबर पे आपके फोन पे मैसेज आ चुका है, आपके अकाउंट पे ईमेल अकाउंट पे मेल आ चुका है. सो यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपको मिला है उसको आप फिल इन कीजिए. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर रखा है एंड आई विल फिल इन दिस कैप्चा. So 464735, okay, and I'll log in with these details. तो जैसे ही अब मैं लॉग इन करूंगा सो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ है मेरे सामने यहाँ पे. ओके, क्लोज. All right, so these are all the details which I have already filled in. Okay, right, and now I'll click fill in the application form. So fill in the application form fill करते के साथ ही they will redirect me to another page where I can fill in each and everything that is required to be filled in this process. Okay, so let's start with this. So first of all the personal details. So यहाँ पे मेरा application number लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है. You can fill in the father's or guardian's name. So I'll fill in random values. Okay, so father's name, mother's name. All right, other personal details, date of birth, male, category, ये सब कुछ ऑलरेडी हम फिल कर चुके थे, ये यहाँ पे फिल्ड इन है. Okay, country of residence, person with disability, no. Now we'll have to fill in our correspondence address. Okay, so जिस भी एड्रेस पे, जिस भी लोकेशन पे आप रहते हो उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे. Address line 2 is not mandatory. You can fill in. You can use any of these lines. Address line 1, address line 2, address line 3. Then country, India. State or union territory. Let's say I'll fill in Andhra Pradesh. Village, town or city. I'll fill random. District, not required. In case you have a district, you can fill in the district as well. PIN code. I'll fill in the random PIN code. नाउ मैंने ईमेल एड्रेस फिल किया था एंड मोबाइल नंबर फिल किया था, ये ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्लेड है. ओके, नाउ दे वांट मी टू फिल ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, सो आई विल फिल इन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर. ऑलराइट, देन ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस एंड दीज आर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, ये हमें फिल करनी ही करनी है. ओके, नहीं अच्छा, यहाँ पे ऑल्टरनेट फोन नंबर एंड ऑल्टरनेट ईमेल आईडी ये मैंडेटरी नहीं है, सो इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू फिल देम और नॉट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स. सो विल हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, बट उससे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं. तो नोट सेज दैट द ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फॉर्म 5, फॉर्म 6, फॉर्म 7 सर्टिफिकेट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट issued by the competent authority. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको फॉर्म 5 मिल जाएगा, फॉर्म 6 मिल जाएगा, फॉर्म 7 मिल जाएगा.
ओके, सो फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए. योर नेम इन द सर्टिफिकेट शुड मैच विद द नेम यू हैव मेंशन्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है. नेक्स्ट, whatever we'll have to upload, इनके लिए आपको गाइडलाइंस गिवन है. So we'll have to upload the recent passport size photograph. The photograph should not be more than 6 months old. ध्यान रखना है. The photo print should be clear and with the continuous tone quality. It should have a white off-white background. तो आपकी जो भी फोटो होगी, फोटोग्राफ होगी, आपके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट या ऑफ व्हाइट होना चाहिए, otherwise disqualification हो जाएगा. The dimensions of the photograph are as given, 30 cross 45 millimeters. The maximum size of the file that you are going to upload should be 80 KB. File formats supported only JPEG and JPG. PNG formats are not supported here. Next, you will require the same photograph uploaded here to be affixed on the admit card on the day of the test. So, जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, सेम फोटोग्राफ आपको एग्जाम के टाइम पे लेके जानी है, राइट? ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए, एंड देन विल ऑल्सो हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ आर वैलिड फोटो आईडी प्रूफ. फोटो आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. यू विल हैव टू अपलोड दीज टू थिंग्स हियर. ओके, great. So let's start with the uploading of the picture and the signature. Okay, so first of all, drop files here and browse to upload. So this is for the photograph. So I'll browse, and photograph I have uploaded. File size exceeds the allowed file size for JPG. All right, so I'll change the size. All right, so I have made the required changes. Now I'm ready to drop the file. So it's 17 KB, and yes, it is human face is not present. Image size is too small to check the quality. So the problem, see, I'm having some problems here in uploading. So make sure that you don't have such kind of problems. So I have further reduced the size. So now the photograph has been uploaded. Now I'll select the signature, and let's see if signature is uploaded properly or not. Yes, it has been uploaded. Now I'll close, and photograph and signature is done. Now I'll go for the ID proof. So I'll upload my Aadhaar card, invalid type. I'll close it. So the type should be PNG, or sorry, not. So the file type prescribed is not a PDF. It should be a PNG. No, it should not be a PNG. It should be a JPG or JPEG, right? So any of these two formats. So let me convert them in the prescribed format. Okay, so now I have converted it in the prescribed format. So let me see if it will accept it or not. So here it is, and yes, it has been uploaded successfully. Perfect. Okay, तो ये सारी problems आप लोगों को नहीं आनी चाहिए when you are filling the form. Otherwise आपके कुछ minutes खराब होंगे, जैसे यहाँ पे अभी मेरे कुछ minutes खराब हुए. Okay, so you can be ready with the prescribed formats. So first of all, format क्या है? JPEG और JPG format, and the size of the passport size photograph and the signature, यहाँ पे 80 KB से कम होना चाहिए फोटोग्राफ का साइज. ओके, एंड फोटो आईडी प्रूफ का साइज 300 KB से कम होना चाहिए. ओके, राइट, ग्रेट. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सेव. क्लिक द सेव एंड नेक्स्ट बटन. Enter a valid alternate mobile number. Okay, so they are asking about a valid alternate mobile number. So let me remove this because it is not at all mandatory. Okay, so let me check if it goes with that. Great. So data saved successfully. Now they are asking about the academic details. So aggregate marks in percentage up to 2 decimal places for my 10th standard. Okay, so select. So aggregate marks in percentage up to 2 decimal places. So you can fill in any value, like not any value, जो भी आपके marks हैं properly calculate करो. So I'm filling it 96. Please refer to the admission procedure for IPMAT 2026. Perfect.
So aggregate marks in percentage up to 2 decimal places. So 96.00 I have filled in. Standard 10th equivalent examination or board name. I'm selecting CBSE board, Central Board of Secondary Education. The name of the school, you can fill in the complete name of your school. Then the year of completion of 10th. So let's say I'll fill in 2024 as the year of completion. Okay. Now they want me to upload the scanned copy of class 10th SSC equivalent examination mark sheet. All right. So if I'll click to upload, so the size should be maximum 300 KB. Okay. तो यहाँ पे भी size prescribed है. Okay. So let's upload that image as well. Now I'm going to upload this here. So I have prepared it. Invalid file type detected. So it should be only PDF. So they are giving bouncers. So मैंने क्या किया, मैंने PNG format, JPG format में तैयार किया, but they are asking for the PDF file only. Okay. So now I'll have to prepare a PDF. काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार PDF कैसे बनाए, तो PDF बहुत आसान है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो, वर्ड पे इस फाइल को कॉपी करो, राइट, एंड सेव एज जब भी करते हैं तो फाइल टाइप आप PDF सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, so I have done that and let's see. Yes, the file has been successfully uploaded. I'll close this and we can move ahead. Now class 12th, have you completed 12th standard? So if you are appearing, you can write no. All right. Now course type 12th equivalent or diploma. I'll select 12th equivalent. Now they'll ask me standard board name. So board name I'll select CBSE. जो भी आपका board name है आप select कर सकते हो. School name, write your proper school name. Okay, जिस तरीके से आपने 10th की details fill की थी, similar तरीके से आपको 12th की details fill करनी है. Now since I have written appearing, मैंने अभी clear नहीं किया है. If you are appearing, आप भी appearing करो. ओके, सो अगर आप अपीयरिंग फिल करोगे तो ये मार्क्स नहीं पूछेगा. अगर आप पास्ड, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर और उससे पहले, तो आप अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इधर यस सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन दे विल आस्क यू योर मार्क्स एज वेल एज दे मे आस्क यू टू अपलोड. लेट्स सी क्या कहते हैं. सो अगर मैं यस लिखता हूं तो यस, यहाँ पे आपसे नेम एंड डिसिप्लिन पूछ रहे हैं. Okay, and they're not asking us to upload the mark sheets. Okay, so I'll put no only. Okay, and school name, again I'll write a random, but you must write your complete school name. Okay, so let's say I'm from commerce background and this is done. Okay, there is a note and then you can save and click next. Please enter course type under 12th. Okay, so course type 12th or equivalent. I have selected this. Okay, again I'll have to fill in my school name and the discipline. Okay, and save and next. Please select 10th equivalent name under, okay, diploma equivalent. Okay, what they are asking me. All right, so here CBSE. Done. Now all the things are done and I can click save and next. Data is saved successfully. Center preference details is the next thing. Now they have asked you your 5 preferences for the test center. Okay, so first one is exam center city preference. So you can fill in the 5 preferred cities which are close to your place. Okay, so here I'm filling random cities. You can select all the cities which are very near to your home. All right, so scroll down, पूरा का पूरा like यहाँ पे like lot of cities are given. Okay, so you can select any of these cities, any of these 5 cities in the order of the preference. First preference उसको देना जो आपके घर के पास है या फिर जहां पे आपका घर है. Let's say if you live in Delhi, so Delhi should be your first preference. Then Delhi के आसपास क्या है, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, इस तरीके से जो भी आपको नियरेस्ट 5 cities दिखें आप उनको फिल कर सकते हैं. Okay. Now, personal interview city preference, the city in which you want your personal interview to be held. So they are asking about 2 preferences. So I'll select Delhi as my first preference and Indore as my second preference. Okay.
and now you can click save and next. Data is saved successfully. So these are all the details, and now you are redirected towards the payment details. So payment details 4,130, which is inclusive of GST of 18%. This is the total money that you'll have to pay. Okay. Declaration by the candidate: I agree. Type characters as shown in the image. All right, this is done, and I'll submit. Please enter correct text shown. Okay, I'll retype it. 837418. Submit. And it will redirect me towards the payment portal, payment gateway. Okay, so 4,130 is what I'll have to pay. So you can go ahead, you can use credit or debit cards, net banking, UPI, UPI QR. So very basic way of making the payments. तो आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं and your entire process will be done. Okay. So friends, that's all. That's all from my side about IIM Indore form filling procedure. I hope you would definitely go ahead and watch the entire video before you actually start with your application process. All the best.